अगर हमें कोई चीज पसंद है और फिर कोई चीज थोड़ी कम पसंद है तो पसंद वाली कर लो हाँ, ताकि उसका मोटिवेशन उस पे आ जाए correct. और वो वाली कंटिन्यू करे। फिर हमारे नसीब में अगर आज नहीं जीतना लिखा रहेगा तो भी हम ना उसको सही। एक्सेप्ट कर लेंगे, ना सही, बट वी विल डू दैट, विल फाइट, राइट। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि ठीक है, आर वी गिविंग द बेस्ट देयर, फिर जो लिखा रहेगा वो तो होना ही है, राइट। वो तो दैट्स ऑल राइट। you have to take that effort because in life after CA also it will not, and that is why it starts training your rights and when you're a CA student. क्या सीए के लिए लाइफ में बाकी सब छोड़ देना ज़रूरी है? क्या सीए का स्ट्रेस वाकई में इतना ज़्यादा है? Hear from the horse's mouth, CA Rudesh Pankhania, also an elected council member with the WIRC. A beautiful conversation about how CAs or students have to really manage their life. आओ सुनते हैं। Welcome to Master Talks once again. Hello. So, I feel one thing that we share in common here is जब मैं भी CA की पढ़ाई कर रही थी, CA was not the only thing my life was revolving around. True. But as an artistic person, it was sometimes difficult for me to settle in that structure. क्योंकि एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है जो मेरे लिए नेचुरल नहीं था, ओवर टाइम डेवलप करना पड़ा। ट्रू। आपके लिए वो कैसा था? नहीं, सो आई थिंक मेरे लिए दोनों था। सो रूटीन भी चीज हो जाती थी, जो डिसिप्लिन में भी चीजें आ जाती थी, एंड बाकी क्रिएटिव साइड में भी वो ऑटो इनकॉर्पोरेट हो जाती थी। तो a lot of students have this कि they would want to do the creative side also while they are doing studies, but I think at that point in time if they can balance that, and जब हम बात कर रहे थे कि अगर हमें कोई चीज पसंद है और फिर कोई चीज थोड़ी कम पसंद है तो पसंद वाली कर लो ताकि उसका मोटिवेशन उस पे आ जाए और वो वाली कंटिन्यू करे। तो आई थिंक मेरे लिए भी वही था, वेरी स्पेसिफिकली। बट मेरे को बहुत पहले से ये था कि ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज लाइक जो भी ले दो अपन उसको बेस्ट बना लेंगे और कर लेंगे, मतलब सो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट बचपन। So I'm actually appreciate the level of acceptance that you have. नहीं तो we become very judgmental. Tax नहीं पसंद है तो नहीं पसंद, खत्म, मतलब उसको हाथ ही नहीं लगाएंगे। True. And usually there's a typical एक पार्ट होता है जिनको थियरीज अच्छे से जम जाते हैं। करेक्ट। एंड एक पार्ट होता है जिनको फाइनेंस, कॉस्टिंग, टैक्स ये सब जम जाता है। Yes. ये वाला पार्ट इसको अच्छे से नहीं करता, ये वाला पार्ट इसको अच्छे से नहीं करता, एंड वो लाइक वो अपने रिजिड माइंडसेट में बैठे रहते हैं। करेक्ट। हाउ डिड यू आई मीन आई एम श्योर ये नेचुरली नहीं आया नहीं, होगा। I think what it do you is- think helped? नहीं, so I think it is of course over the years, but I think I have maybe I would say, I'm not sure how, but I think it's been crafted me for myself. That is how कि accept for anything, मुझे लगता है acceptance of anything is very important in life. तो unless हम कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, कोई सिचुएशन एक्सेप्ट करते हैं, हम फिर उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है और भी आगे जर्नी। सो आई थिंक एक्सेप्टेंस इज always one of the most important. So I think that is how I've nurtured my mind, I think over the years, कि ठीक है, how do we move from 1 to 2? It is only by accepting that 1 is like this only. अगर आप कोई चीज को, उस सिचुएशन को आपके बियॉन्ड, आपके कंट्रोल में वो नहीं है तो वो नहीं है। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। सो अग्री द फैक्ट कि मुझे शायद ये वाला पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ा कम पसंद है ओवर दिस, पर पढ़ना तो मुझे है ही, राइट। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? डू आई हैव एन ऑप्शन? अगर मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं तो आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट एंड जस्ट कंटिन्यू एंड गिव the same weightage. So I think that is what it is. Wow. So I know that you come from an extremely spiritual background. ये spiritual practice आपने कौन से एज पे शुरू की? No, so I think spiritual practice वो घर से ही है। So बचपन से ही it was carved. That also would have contributed. Absolutely, absolutely. So I think spiritual, at least when we look at in our country, ठीक है, different caste, religion, we use different name for different god, but I think it's that power, somewhere the ultimate across energy. Ultimate energy, we need to have that belief, yes, in that power, that things will be taken care.
So I think that is something. So बचपन से of course वो spirituality घर पे बचपन से वो सब God everything that was always there. So I think that auto inculcated. Wow, wow. So I guess this is something ये एक आजकल missing है, and somewhere this is also why the students pursuing CA today struggle so much, because उनके दिमाग में they have this thing कि success only means first attempt strikes. Correct. And वो जब नहीं होता, it directly translates into I cannot be a good CA. True. I am a failure. Correct. तो वो because वो acceptance नहीं आता. Acceptance नहीं आता. That culminates into irritation, that culminates into like और भी ज़्यादा isolate करते जाते हैं अपने आप को, Very true. and अपने आप को और ज़्यादा punish करते जाते हैं. I think there is nobody in life who has never failed. Everybody fails at different places or at different junctures of life. Yeah. तो I think हम क्या हो जाता है, कोई चीज अगर कोई सीए में लेट्स से फेल नहीं हुआ, हमको लगता है अरे यार वो तो नहीं हुआ है, यार मैं हो रहा हूँ, बट दैट पर्सन माइट हैव, इफ आई हैव टू टॉक फॉर मी, ठीक है, आई क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, बट दैट डज नॉट मीन आई हैव नॉट सीन फेलियर ना. अगेन फेलियर इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म, राइट? इट इज नॉट जस्ट in that exam, or possibly if I wanted this particular rank or I wanted this percentage, the moment I've got anything lesser than it's typically like a failure, right? कि आपको ये करना था और ये नहीं मिला. So I think बट हम उस फेलियर को इतना ज्यादा बड़ा बनाते हैं, एज यू राइटली सेड, क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और फिर कि ये मेरे साथ ही क्यों. But I think we need to go little beyond that. I am not the only one, or it's absolutely all right. What I can do with this? Absolutely. So I think we need to take that step. So the first time that I failed was my first attempt of IPCC. उसके पहले, just like you, I was an ace performer. Correct. 12th में अच्छे खासे marks आए. I was in the top 1% of Maharashtra and everything. CPT भी first attempt में हो गया clear. Correct. I was like, चलो CPT हो गया, IPCC भी हो ही जाएगा. Correct. Because एक जगह पे बैठ के पढ़ना was never a big deal for me. True. But when I failed, मैं मेरी ITT की ट्रेनिंग से घर वापस जा रही थी, ट्रेन में बैठे बैठे रिजल्ट चेक किया था मैंने. Okay. And I was जैसे अंधेरी to बोरिवली, I was crying all the way. And वो पूरा दिन रोई, अगले पूरा दिन रोई. And that day I called my husband up back then, who was just my crush. Okay. And I was like, मैं IPCC fail हो गई, ये सब चालू था. He's like, what do you love doing the most? At that point it was writing and painting. Correct. He's like, तू वो कर और कुछ मत कर. It's like, okay, it's okay if you don't go back to studies. Correct. I remember I made this painting, sunset का, beach का and everything. वो मैंने फिर मेरे सामने डिस्प्ले करके रखा. This is the celebration of my first failure. Excellent. वो पेंटिंग खत्म जिस दिन की, वो सूखने रख दी. And I picked up my modules again and I started studying. I was like, हो गया पूरा. वो जो वो frustration था, I feel somewhere जब वो failure आता है, you need to also process that frustration. Yes. वो पहले process करो, go through it. एक बार वो खत्म हो गया, सिस्टम से निकल गया, then go back to what you have to do. हाथ धरे बैठे हुए नहीं रह सकते. So that's what I've always, I think in my 12-13 years of mentoring students journey, the moment some student calls me, and I appreciate what your husband said, which is correctly the thing which has to be done. So whenever a student fails, I think the most number of calls that I get is on the result day of CA, inter, final, foundation. Again, somebody who's cleared calls up, somebody who does not clear calls up. So I think generally मैं उस दिन phone free रखता हूँ and I pick up phone on that day. So I think, and they're like, so one thing that I tell is keep your phone and for the next 2 days don't do anything. Just process it, or just live the life, appreciate things, and जो आपको पसंद है वो करो. जैसे आपने कहा पेंटिंग, I say the exact thing, जो आपको पसंद है चीजें करो, टीवी देखो, खेलो, घूमो, खाओ पियो. And they're like, नहीं कल से पढ़ाई करनी है ना. I'm like, don't. If you're coming to me for mentoring, if you want to listen to me, this is what I will guide. Because आप next दिन सीधे पढ़ाई करने वाले, you're not in a state of mind, right? Correct. You need to process that, come at a very natural, normal level once again, then get back to, normal. So very correct. That is important. So we need to get, so if we look at, let's say number scale. ठीक है, एक नंबर स्केल में हमने स्कूल में पढ़ा था, एक 0 होता है न्यूट्रलिटी, एक साइड होती है पॉजिटिव, एक साइड होती है नेगेटिव लाइन. तो अगर हम नेगेटिव लाइन पे है तो वहां से डायरेक्ट पॉजिटिव साइड जंप करना डिफिकल्ट रहता है. I need to come from there to the neutral line, zero line, and then go. So that becomes most important for any time, anything. Very good. So I guess
this is why it's very important for every CA student to have some kind of co-curricular activity going on. Yes. Otherwise पहला instinct यही होता है, and this is something that happened with me also. जब मैंने मेरी family को declare कर दिया कि मैं CA करूँगी, most of them told you'll have to give up your social life because I am a butterfly. I am everywhere. So Correct. like you'll have to isolate yourself. किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाएगी, फ्रेंड से कट ऑफ कर देना पड़ेगा, ना तू डांस कर पाएगी, ना ये कर पाएगी, ना वो कर पाएगी. फर्स्ट इंस्टिंक्ट आई वाज लाइक ओके, इज इट रियली दैट डिफिकल्ट? एक तो वो, दूसरा आई वाज लाइक चलो अगर करना भी है सीए तो व्हाट्स द हार्म इन गिविंग इट अप फॉर, बिकॉज़ सीए लाइफ लॉन्ग तो करना है नहीं. Absolutely, It would only absolutely. be for a That particular part. phase. Yes. But CA करते करते one thing I did continue was writing. Super. And every time that I came back from a very frustrating lecture or I studied subjects जो बहुत draining थे, the one thing that helped me re-energize myself was writing. That one Correct. activity that was like my anchor. Super. But CAs usually इसको छोड़ देते हैं. Yes. So how do they figure out कि हाँ ये चीज करनी है? Like how do they come up with this thinking? Because हम दोनों artistic थे तो somewhere it was also natural for us. Correct. Correct. But बहुत लोगों के लिए it's also not natural. True. How do they find their anchor? No, so number one is, so finding anchor, finding passion is not a very to the point अच्छा कल से मेरा ये passion है. It is to be once again मैं चीजें explore करते जाता हूँ, मैं चीजें करता हूँ. शायद कुछ लोगों के लिए एक particular चीज passion नहीं होती. Yeah. You know, maybe for some days it is X thing, हाँ. for next day I start with Y, for next thing I continue with Z. And I tell to every student, even when they are studying for the exam, you can always have that half an hour Yes. जब आप कुछ चीजें कर रहे हो which has to be nothing to be doing with studies. That's absolutely all right. Correct. So you plan accordingly your things. मुझे हाँ. पता है ये आधा घंटा मैं यही कर रहा हूँ. So very specifically वो आधा घंटा, एक घंटा, whichever, maybe dancing, singing, guitar, gym, anything. So I think वो अगर आप चीज कर रहे हो ना, आपको अगर किसी को पता नहीं मैं क्या करूँ, it's absolutely all right to have blank state of mind. Yeah. अगर आप blank state of mind में नहीं हो तो आप सोच ही नहीं पाओगे ना. So that is why it is important to do nothing. Yes. So when we look at lot of yoga, meditation courses, so why this? They try to put you at a blank state of Correct. mind so that you can think, Correct. because otherwise we are Too occupied. yes, there's so many thoughts that are always going on in mind, right? हम generally अगर क्लास में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो भी हम टीचर को सुन रहे हैं, but back of our mind इतने thoughts process कर रहा है, right? So that is why it is important to have a blank state of mind. जैसे कहते हैं कि सोने के पहले don't use your mobile हाँ, very typically, हाँ, right? We used to कि अच्छा हम Scroll करके, स्क्रॉल करके हाँ. डायरेक्टली सो जाए, हाँ. बट क्योंकि वो वाली चीजें हमने स्क्रॉल करके अपने दिमाग में तभी जस्ट डाली हुई है, सो इट नीड्स उसका टू process, प्रोसेस yes. होने में, तो फिर हमारी नींद को भी एक्चुअल नींद लगने में टाइम लग जाता है. Correct. So I think essential for everybody to find that some time to have a blank state of mind so that आप सोच सको मैं एडिशनली क्या करूं. Fantastic. That is it. How was your lifestyle around this aspect when you were pursuing CA? So I think my lifestyle was I'm a very average guy. Very typically. So studies में भी ऐसा लगता है अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, मतलब स्कॉलर विल, ऐसा कुछ नहीं है. It is I'm being very serious, right? Since school time, college time. It's just that as I said, I love studying. हाँ. तो मैं फिर वो चीजें करता रहता हूँ. So Correct. but otherwise ऐसा नहीं है कि भाई एक बार पढ़ लिया सब दिमाग में आ गया, हाँ. ऐसा कुछ नहीं होता हाँ. है. ऐसा कोई जादू नहीं है. हाँ. So I think my lifestyle has been very common. जो चीजें करनी है, अगर आपको क्लासेस जाने हैं, कॉलेज जाना है, ये पढ़ाई करनी है, आई ट्राई टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन. Yeah. सो आई थिंक डिसिप्लिन इज समथिंग जिसके बिना चीजें नहीं हो सकती है. Correct. सो आई थिंक मैं वो करता हूँ, एंड मैंने बाकी चीजें हमेशा ओपन रखी है. कोई फ्रेंड्स बुलाएंगे डिनर पे जाना है, लाइक चलो, बट वन थिंग, आई विल नॉट मिस माई क्लास इफ आई हैव अ क्लास एंड गो फॉर अ डिनर. हाँ. So that is something there. So I think वो discipline करके I have continued my lifestyle as it is the way I have been across my CA life journey as well. I have enjoyed my entire college life along with my CA हाँ. life, articleship. I still remember making sure not to miss my college fest, हाँ. including when my articleship was going. I had told my boss 1 month prior that we have on this day fest, so I will have to leave early.
मैंने 1 मंथ पहले नोटिस पीरियड दे दिया, बिकॉज बट नेचुरली आप अगर बॉस को जाके बोलोगे तुरंत, अच्छा एक दिन पहले कल मुझे हाँ जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट असाइनमेंट, इज नॉट गोइंग टू, करेक्ट बट करेक्ट यू प्री इन्फॉर्म. हाँ सो काफी बार बच्चे ये भी एटीट्यूड प्री इन्फॉर्म नहीं करते, करेक्ट फिर करेक्ट वो हो जाता है, बॉस बोलते हैं अरे यार ये तो हम इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, हाउ कैन यू सडनली गो, देन देयर इज अ रिफ्ट. हाँ सो अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ जाना है, फेस्ट तो डेफिनेटली 1 महीने पहले से पता है, राइट, मुझे पता है मुझे जाना है, तो व्हाई विल आई नॉट प्री इन्फॉर्म. ट्रू So I think that is very essential to have that discipline, have a calendar, put things into, फिर वो आप मोबाइल में रखो, डायरी में रखो, anything. So I think वो essential है. wow so I believe while you were studying your goal was to enjoy the process and not to become a CA. Well, it was becoming a CA would be a byproduct of Yes. enjoying the process. So सीए पढ़ रहे हैं तो सीए तो बनेंगे बन ही ही. जाए. मतलब नहीं कैसे बनोगे? आई थिंक फॉर हमारे सर कहते थे, मुझे आज भी याद है, तुम नहीं कैसे बनोगे, तुम बनोगे ही. Hmm. बट अगर मैं सिर्फ वही सोचता रहूंगा तो शायद मैं प्रोसेस नहीं एंजॉय करूंगा, ऐसा Yeah, मुझे लगता है. yeah. आई हैव लव्ड गोइंग टू क्लास. हाँ I would be happy. My classes used to start at 7. correct I used to leave home I used to get up at like 4:30. हाँ But I used to love that journey. हाँ मतलब I can relive that life as well. So I think वो एक मजा, because उस प्रोसेस को आप एंजॉय कर रहे हो. Because अगर आपने वो चीज करी है तो you will reach that. And let's say God forbid आप नहीं पहुंच पाते, उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाते, तो भी I think it's all right. I remember if we watched Mahabharata, right? So the last fight between Duryodhan and Bhim, हाँ so Krishna ji was advised to not prompt them हाँ by the elder brother, right? So and Bhim says ठीक है, last fight है, we'll give our best. मतलब अगर हमारे नसीब में, and because Duryodhan was the only one left, yeah फिर हमारे नसीब में अगर आज नहीं जीतना लिखा रहेगा तो भी हम ना उसको सही. एक्सेप्ट कर लेंगे, ना सही, बट वी विल डू दैट, विल फाइट, राइट. तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि ठीक है, आर वी गिविंग द बेस्ट देयर, फिर जो लिखा रहेगा वो तो होना ही है, राइट. वो तो दैट्स ऑल राइट. wow so this is the reason I'm discussing this is CA में घुसते ही पहला instinct या पहला क्या बोलते हैं, people feel that it's a rite of passage के कॉलेज तो नहीं ही जाना है. True. कि जो जीना 11th-12th में जी लो, डिग्री Correct. का कॉलेज लाइफ जीने नहीं मिलने वाला, which is also why they particularly look for colleges which do not have strong attendance. ट्रू, वेरी ट्रू. So how is this I would say taking away from the process? नो, सो आई थिंक कॉलेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जैसे सीए करिकुलम, जैसे सीए कोर्स है, सीए एज सच इज अ डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स, Correct. बिकॉज कॉलेज नहीं होता, राइट. Correct. हम एनरोल करते हैं सीए इंस्टीट्यूट के साथ, फिर अपनी पढ़ाई करते हैं, कोई लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, कोई नहीं करते, खुद से पढ़ते हैं, एंड एवरीथिंग. तो आप अपने जैसे लोगों को कहाँ मिलोगे? आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कर रहे हो, कॉलेज में मिलने वाला. तो आई थिंक एवरी स्टूडेंट जो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स और कर रहा है, उसके बाद कॉलेज कर रहा है, शुड डेफिनेटली गो, क्योंकि वो जो एक कॉलेज एटमॉस्फेयर ना आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है Yeah. in life. So I think not necessarily if you're not able to go every day, but हाँ how can you not go twice or thrice a week, right? Even that fills up your attendance. correct. So how can you not go there, right? Yeah. I think that becomes very essential. So बहुत चीजें जो कॉलेज में along with studies भी होती है, co-curricular activities से लेके meeting different people, knowing from them, seminar sessions. So I think बच्चों ने जाना चाहिए definitely. So this reminds me जब मैं OP करी थी back then when the first level of JMCS was OP. Correct. It was only a 5-day program. Yes. And the first session that we had, the mentor there, she asked all of us कि सब लोग अपना अपना life का vision बता. And we were about 50. Correct. 49 of those said my vision in life is to be Become a CA. CA. And I said कि because तभी मेरा teaching का wiring शुरू हो गया था. I was like I want to be a teacher, I want to do this, I want to do that. Correct. And मैं वैसे बोल के गई and everyone else was like हाँ ऐसे CA ऐसे with the typical ढीला ढाला body language. Correct, They're correct. like हाँ CA. And the mentor was like CA तो तुम अगले 4 साल में बन जाओगे. तुम्हारा life vision 4 साल में पूरा, उसके बाद life को क्या purpose दोगे? Correct. So इस पे what would you tell people कि vision किस basis पे होना चाहिए and how do they decide that CA is the tool to achieve that vision? If we remember, I think
very recently I'd watched this movie, and of course my thoughts are very similar since right from earlier. So when the moment what is that movie of this IAS IPS 12th guy, fail. 12th fail, right? In the interview where he हाँ, हाँ. reached, right, they asked him, okay, what if you don't get selected and you know this is your last attempt, right? So he's like, you know, गाँव जाऊंगा and everything. तो and then he says, आईपीएस बनना यही लाइफ का गोल नहीं है, राइट? ये तो एक जरिया है. So I think that's exactly the same thing. Becoming CA is not just the goal of your life, right? Because that's just a one part of your life. Of course, one of the most important part of the life, because बहुत सारी चीजें शेप हो जाती है Correct. उसके बाद, उसके रिलेटेड थिंग्स आप करने लग जाते हो. But that just does not become an entire goal of your life हाँ. at particular. At a larger vision, आपको लाइफ में क्या करना है, you know, that is something each student needs to think over. शायद काफी बार क्या हो जाता है, we restrict of course कि तभी के लिए we would Yeah. not know कि कि बाद में सोचेंगे वाला thing. That is why a lot of students, you know, कि अभी के लिए तो मेरे को CA बनना है, हाँ. that becomes the, and which is also many times correct, because you know they would not want to think then beyond. Correct, correct. So you know they're thinking that vision till that particular हाँ. point in time कि पहले ये कर लेते हैं, बाद में बाकी सब कर लेते हैं. Yeah. But that is absolutely all right as well. But they should not miss out, you know, important things happening in life at that point in time. That is, you know, I think always मैं बताता हूँ बच्चों को. So, you know, this is something that I have done myself and somewhere I also regret it. मैं कॉलेज हार्डली कभी गई. Okay. 3 साल में 30 लेक्चर अटेंड किए होंगे Okay. मैंने. And दूसरा, I've missed out on a lot of things. So आज when I look back, I'm not even getting the degree. I quit like just before I had to appear for my attempt. Correct. And this U-turn मैंने सिर्फ तब लिया because COVID आया. May 2020 was supposed to be my attempt. March Okay. happened. Correct. So it gave me a lot of time to actually think कि is putting that time really worth? Correct. उसके पहले there were actually a lot of signs telling me that it's not meant for me. But Correct. then I was like, नहीं, I'm going to think about all my, you know, longer vision purposes and True, everything true. after finals. Because Correct. तभी it's like, you know, घोड़े का वो blind horse से Yes. लेके चलो कि हाँ, attempt to attempt ही हमारी life चलती है. Correct. But जब वो space मिला to actually introspect, that's when I was like, यार मैं 12 hours पढ़ रही हूँ. मैं CA बन भी जाऊंगी. It was never also the fear of failure or anything. Correct. But the question was why? And that gave me the answer कि I like there is no why to it. The CA बस इसलिए करी, account अच्छा लगा था, and somewhere along the line I stopped enjoying it. Okay. But I continued just because अभी समुद्र में डूब गई तो अभी तैर के जाना पूरा पड़ेगा. करना है. Correct. Correct. So taking that U-turn was very difficult. True. कि True. यार अगर CA छोड़ दिया तो what am I, just a BCom grad? Correct. एक वो, दूसरा the amount of time that I had invested. Already I took 6 invested. attempts to clear IPCC. So Okay. it was also, but yeah, it would be unfair to the amount of attempts I've given. Correct, correct, correct. Unfair to my parents' journey also. True. But at the end it was like यार नहीं मजा आ रहा है. Let's take a U-turn. Correct. फिर अभी ऐसा लगता है ये 5 साल अगर मैंने आर्ट्स में पहले ही दे दिए होते तभी साइकोलॉजिस्ट बन गई होती तो आज Correct. कहाँ की कहाँ पहुंच गई होती मैं. Correct. Correct. तो समवेयर आई फील ये डिसीजन अगर पहले ले लिया होता, रिफ्लेक्शन पहले कर लिया होता तो इट वुड हैव हेल्प्ड मी बेटर. True. True. सो जो यू नो पहले से का जो रिफ्लेक्शन होता है कि एक थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए. होना इट्स नॉट अ क्लियर पिक्चर, एटलीस्ट अ वेग बिग पिक्चर. It helps. हाँ. It helps, you know, in your journey when you are doing things. Correct, But in fact, correct. I would ask you how difficult or easy was for you to take that U-turn. So it was difficult because वो उसको मैंने पूरी आइडेंटिटी बना दी थी मेरी True. True. कि सीए नहीं तो मैं कुछ नहीं. कुछ that is one of the So, most important when exactly. somebody has to. Exactly. Great. तो तभी I was like यार मतलब this is the only thing I've dedicated my life to for the last 5 years. ऐसे कैसे जाने दूं मैं इसको. Correct. वैसे खून पसीना से सब कुछ बहा है. I've had the worst nights ever. तो उसमें भी I was like यार मतलब today when I reflect yes anxiety थी, stress था, but आज एक तरह से वो मोटिवेशन भी काउंट करता है कि वो झेल लिया तो ये भी झेल लूंगी. No, it is always But, like that. हाँ, but easy फिर तब हुआ because my dad he's always been a believer कि अपने passion को follow करो, Correct. अपना intent clear रखो,
उसके बाद फिर जो भी चेंजेस करने अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाने, if it means Very, taking a U-turn, so be it. It very, does not very make a correct. difference. And I think, you know, society, we have set age limits. अच्छा, ये age पे हाँ. ये होना चाहिए, ये age पे होना चाहिए. There is no law, right? There is I no also act. had this because I was 20. I was about to turn 23 तभी. Okay. I was like 23 years की होगी ना, सी बनी हूँ, ऐसे यू नो ऐसे 2-3 साल में शादी करने का प्लान है, तो पूरा आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बहुत कुछ था. Correct, But then correct. my dad was like, whatever you do, whatever you don't do, you're still going to be our daughter. You're still going to figure something or the other out. तो छोड़ दो. You know, just give yourself नहीं a नहीं, break. essential. I think parents support plays बहुत important Absolutely, role, you know, absolutely. during all these times. And there is, as I said, there is nothing right or wrong. The way I Hmm. said, you know, if we don't finish a particular book, it's all right. Even if we हाँ. finish, it's all right, absolutely. हाँ. So important is, are we enjoying and are we then doing something constructive? True. So becomes important कि अगर हम कोई चीज छोड़ भी देते हैं, जैसे when you are saying you've left CA, हाँ. but उसके बाद I need to still give my 100% to the other thing. Elsewhere, correct, काफी बार correct. बच्चे क्या हो जाता है, अच्छा ये छोड़ दूं, अब they don't do and then हाँ, pursue anything. हाँ. That is a wrong thing. Correct. So अगर आप उसके बाद कुछ कर रहे हो, you need to do with a greater zeal and Yes. enthusiasm. Because you have to prove yourself all over again. Yes, yes. Hmm. So, But बढ़िया. यहाँ पे one more question that I had was endurance level. आपके जनरेशन का एंड्योरेंस लेवल वाज डिफरेंट. Correct. मेरे पढ़ते हुए इट्स डिफरेंट. True. आपसे पहले जो पढ़े हुए दे वर लाइक Absolutely. मतलब जो भी हो जाए, they've done a lot more, they've struggled a lot more to get that prestigious Absolutely. degree. Yes, yes. ये change of endurance जो हो रहा है, what do you have to say about that? No, so I think if we look at, you know, the way we call it Gen Z, हाँ. you know, now and then, I think I recently heard some other term Gen also. Alpha. Oh So yeah, Gen I am Alpha. technically Gen Z. I don't really feel that I belong to it, but जो अभी जो धीरे-धीरे आ रहा है, That is Gen Alpha, yeah. So हाँ. I had heard somewhere by, you know, some students only. So no doubt the endurance level of people, you know, at every generation has gone down definitely Yes. drastically. But it is very essential is, do we use that positively or negatively? Mhm. काफी बार चीजें, हम सारी चीजों को, of course we would say that endurance level has to be, you know, high of a particular student, so that is but naturally there. but अगर उसका endurance level बहुत ही कम है, तो वो हमेशा उसको फिर, it should not just become a negative for him always, him or her. I think for that particular student, Mhm. endurance level कम होना, meaning what, you are trying to jump from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 हाँ. and then, right? हाँ. Meaning you're trying to multitask a particular thing, Hmm. right? You're trying to balance many things. हाँ. Can this become your strength, right? I think that also becomes an important thing. So the moment आप ये कर रहे हो, फिर एक ठहराव essential हो जाता है किसी की भी व्यक्ति Correct. में, तो वो important होना मांगता है. But काफी बार, so it's very, it's like those, you know, Monday motivation हाँ. thoughts, you know, or Monday non-motivation thoughts. It हाँ. is, you know, we say Monday कि blues. मंडे ब्लूज. सो अगर हम हाँ. किसी को बोलते हैं, अभी लेट्स एन एग्जांपल, किसी ने करेला अभी तक टेस्ट ही नहीं करा हुआ है, ठीक है, हाँ. वो भी नहीं खाना चाहता है क्योंकि उसको लग रहा है ये करेला कड़वा ही होने वाला है. क्यों? क्योंकि सबने सुना आके है. उसको बोला हुआ है, उसने सुना है कि करेला तो कड़वा और नहीं पसंद आएगा, बट ही इज येट नॉट टेस्टेड येट. सो दिस बिकम्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हर्ड sayings, right? So then that person is automatically made in his mind. But when we look at this coming as such generation, they would want to do a lot of things, Yeah. meaning they are ready to explore into multiple हाँ. things, which is always a nice thing also. हाँ. If we look at a generation earlier, they were not explorative in nature, right? Yeah, yeah. वो एक चीज करी तो उनको और चीज नहीं. हाँ. So मैं वही बोलूँ, मैं endurance का पॉजिटिव साइड देख रहा हूँ कि उनको वो एक्सप्लोर करनी है चीजें. Correct. You know, they would want to try out to different things, which is Correct. never a wrong thing as well. True, true, true. But उसके साथ important is, how do we get that ठहराव? हाँ. That becomes, that only very less % of population try to. So everybody who is, you know, trying to do different things, important is to still do in multitasking one thing at a time, so that you give your best at that point in time. Fantastic. So, you know, this actually brings me to the things they have to pay attention to as a CA student. Correct. Now, for those 4 to 5 years, हम लोग सिर्फ technical skills पे लगे रहते हैं. Uh-huh. And over those 5 years, there are only 13 days
by the ICI over those Correct. 3 years जो soft skills पे करते हैं. Correct. Is that enough? I'll tell you. So, of course, now CA course is done by across India population, हाँ. right? हम मेट्रो सिटी में बैठे हैं, Hmm. but there is somebody who is sitting in a tier 3, tier 4 city. There are not so many resources. A Correct. CA course is typically, less money wala course, right? So if you have to look at from that perspective, it is never. So 30 days are just a starter point हाँ. for a student, and then the student needs to continue. So if we Correct. look at now the student bodies which are popularly known as the CASAs, हाँ. that is Chartered Accountant Student Association, and depending जो region के होते हैं उसका according, तो जैसे कि वेस्ट रीजन में we call it विकासा, Correct. WICASA, Western India Chartered Accountant Student Association. हाँ. नॉर्दर्न में call it निकासा, NICASA. हाँ. तो ये वाले bodies, so many weekly, bi-weekly, monthly seminars, conferences, sessions करते हैं, by which a lot of students get to network amongst themselves. Students become volunteers. Students plan out the entire thing. They do the MOC part, anchoring part, introduction part, which is automatically nothing but an extended Correct. version of an orientation course, MCS course. Correct. But of course, not every student comes in. I was about to come to that. Right. Turnout rate is very low. I do not know out of all the मेरे CPT का बैच, IPCC का बैच, and I used to go to HR. So BCom मतलब पूरा CA से भरा हुआ. Correct. उन सब में से there's not even one person that I know जो ये events में जाता है. But very essential, मैं वही कह रहा हूँ ना. So जो 30 day के courses है, हाँ. those are compulsory courses. हाँ. ये बाकी सब optional होता है. Correct है. You have. So for every student it is always like that. मतलब you have to take an effort. True. अगर मैं effort ना लूँ तो खाना भी तो मुझे खुद से खाना पड़ेगा ना. वो ऑटोमेटिकली थोड़ी AI मेरे को खिला देगा. अच्छा डिश सामने रखिए अंदर जाएगा. Right? I'll have to pick up a spoon and eat. Right? हाँ. If I am hungry, I'll have to tell my mother that I am hungry. Give me food. True. Right? At home True. also. Becomes the same way. Yeah. Now, of course, a social media channel is updated. A student needs to come to the institute, right? But he or she will have to take the step. An orientation course is done why? That पहली बार एक बच्चे सबको मिल रहे हैं, वो नेटवर्किंग कर रहे हैं कि ये सब चीजें भी आप कर सकते हो. Correct. उसके बाद the next onus, the step is to be taken from the student, which does not happen many times or most times, which the institute also tries to cater. The student bodies also, caters के आइए push करिए. But of course, which I totally agree that the turnout ratio has always been, but it has become better over the years, of course. Okay. Yes, so there have been more and more. I look at today's students who've been, they're currently CA students and who are being a part of their Vikasas and everything. Their networking is stronger than mine. Matlab, they know across India CA students because they have been a part of those Vikasa groups and everything. I tell them I need a student, somebody in Bangalore, they're like, sir, ye mere time pe bacha tha, they would have that. And the other is thanks to social media. हाँ. The LinkedIn, Instagram, they write better over there. Yes, They, like and comment, they are connected. So I think that helps in networking and connecting them as well. True, true. So the ones who are not turning out, what would you tell them कि भाई आ जाओ, सिर्फ आ जाओ से तो होगा नहीं. होगा. What they need to see what is in it for them, because at the end of the Absolutely. day, अगर CA है तो पॉकेट में क्या आ रहा है वो देखें. Correct. No, I So think intangible पॉकेट में यहाँ पे क्या जा रहा है tell me. नहीं. So अगर हम देखें, the moment मैं CA खत्म कर लेता हूँ, हाँ. मैं क्या करने वाला हूँ? मैं जॉब, घर पे तो नहीं बैठने वाला. मैं जॉब करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, बिजनेस करूंगा, ये चीजें करूंगा, right? If I need job, if I have made connections before, all of these things say, or my communication, my soft skills has become better, it's going to help me over here, right? मैं practice भी कर रहा हूँ. If I am going to approach to people जिनके साथ पहले मैंने काम करा हुआ है during the student bodies, activities, this is going to help. Business करने वाला हूँ तो भी तो मेरे को help करने वाला है, right? I think so that first step. So every student who does not go, my sincere request is, why not? Right? Why not? Why would you? Then I would compare with some other maybe courses. अच्छा वहाँ ऐसे हो रहा है नहीं. But this is the step has to be taken, right? I think the entire CA course is like that. Yeah. Okay, you need to take that first step, Correct. towards that studies, towards those bodies, incorporating that thing. Because everything in life will never be compulsory.
The course teaches you that you have to make efforts to do things, because after CA के बाद भी compulsory नहीं होने वाला है, हाँ इसलिए 30 days ही compulsory है, हाँ उसके बाद आपको करना है, आपको हम्म, discipline खुद से डालनी पड़ेगी. हाँ So you have to take that effort, because in life after CA also it will not, and that is why yeah. it starts training your rights in when you're a CA student. That is very true. And somewhere I guess I've also learned this lesson kind of. And so because people skills come very naturally to me. Correct. The courses I enjoyed a lot. True. कुछ 2-3 ऐसे friends बनाए. Of course, and for those 15 days we are hanging out with like big groups. But after that, there's only a conversation with 2 to 3 people True, that true. continues. Correct. Talking about those trainings, for how long did you teach at I've WIC? been an OT GMCS faculty for I think almost a decade, and maybe mentored via GMCS and everything more than like almost 50,000 odd students. हाँ And I think it's been a beautiful journey of because more than training them, I think I got trained, because while I'm training 50, but I'm training one thing, right, Yeah. to each 50. yeah But now each of these 50 people are different. yeah they receive So it differently. they receive it differently, and then they emit a different energy. So everyone Correct. is going to different. So I'm learning 50 different things. हाँ So I think has been a beautiful journey. wow. So over this decade, जो first day पे जो batch आता है, every year I'm sure demography में जी. लोगों के हाव भाव में कुछ ना कुछ difference over the time देखा होगा. Correct. So what is the natural ability of people in terms of soft skills a decade ago, and how is it changing now? No, अगर मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर हम आज का population देखें, of हाँ. course comparatively there are more people who are more confident, who are better on stage comparatively. I will give this credit to the entire ecosystem that has been automatically built. This जो is education system जो बन के आ education रहा है. system, and of course we'll have to give that little compliment to the COVID. हाँ. Because that online social media, वो हाँ. सब चीजें हो गई, so हाँ. people have got that presence. Presence से भी अगर जैसे everybody, he may not be creating content on social media, but he at least watches the content. Correct. Right? So somehow he knows that particular thing. तो उसके लिए वो चीज नई नहीं है. हाँ. It's not new thing. Earlier हाँ. it was a new thing for him. हाँ. Today it is like, acha, he knows that. So that one step, that barrier is already broken, he's moved to next. So he is still in that now in a positive frame of mind, अच्छा ये कर लेंगे. हाँ. तो comparatively better, but there will be still students who need much more that push, that guidance to be better at soft skills, maybe in terms of leadership, Yeah. in maybe terms of communication, negotiation skills, हाँ. resolution skills, anything. So I think, but naturally there's a long way, and anything, because see, it's a process, right? Correct. I mean, even for today, I may not say that I will communicate in the best manner, because हाँ. you automatically keep- learn, you हाँ. keep learning, because there will be something or the other new thing जो कोई ना कोई एक ऑडियंस होएगा जो आपको सिखा के जाएगा. Correct. So ऐसे में in this audience, tier 1 students and tier 3 students के personalities में क्या difference देखा है? नहीं, सो ऑफ कोर्स, सो टियर 1 एंड टियर 3 के पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा काफी बार डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड उसके अलग पहले है. वैसा था, राइट, एंड वी कैन नॉट ब्लेम देम आल्सो, बिकॉज उनका स्टाइल, लिविंग स्टाइल बोलो, उनके फ्रेंड सर्कल बोलो, द लैंग्वेज दैट दे वुड टॉक, इवन इफ बोथ ऑफ देम आर टॉकिंग इंग्लिश फॉर दैट मैटर, द हाउ क्लियर एंड क्रिस्प देयर languages, वो फर्क हो जाएगा. Right from a dressing sense would be different. Maybe a lot of time your confidence level is definitely different. So I think these have been startling difference generally. तो ये वाले हो जाते. But I have gone to remote cities also. I've gone to remote villages for that matter for training programs. And we might think, अरे remote में बच्चे confident नहीं रहेंगे, मतलब, but they are super enthused. Yeah. It's just that sometimes they may not be able to talk English language, but the creativity that I have been to remotest village and students, and I'm like, if I've done that similar activity कहीं metro city में, and इनके यहाँ भी इन्होंने जो creative चीजें करी है, that has been at other level, because they bring creativity from your, True. right, from the They're very heart as raw well, and very raw. authentic. Yes, Very good. yes.
एंड वो So, टीयर 1 में मिसिंग होता है टीयर 1 में काफी बार मिसिंग होती है, तो बिकॉज़ दे वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड लेयर्ड yes, so creativity does not have a structure, no? So एब्सोल्युटली क्रिएटिविटी के पास स्ट्रक्चर आप बना दो तो वो क्रिएटिविटी creativity नहीं नहीं रह रहेगी। जाएगी, राइट? वो एक मशीन ओरिएंटेड बन जाएगी। करेक्ट तो ऐसा हमको लगता है काफी बार कि टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज, बट द क्रिएटिविटी पार्ट इज एट अ वेरी हाई लेवल। So, you know, I remember OP में I had one of these batchmates, Hmm. राजस्थान से specifically यहाँ के batch में enroll किया था so that he engages with people who know better English than him. क्या बात है? And कुछ ऐसे ice breaking session हमारा चालू था and he like everyone was about what are they expecting from this session because relatively एक open ground Correct. setup था वहाँ पे. So he said I just want to learn better English. Hmm. एंड मतलब टूटी फूटी इंग्लिश बोला बट जो कॉन्फिडेंस से बोला True, ना true, तो true. दैट्स वेयर आई वाज लाइक यार बहुत सारे लोग ऐसे सिटीज में से दे ब्लेम देयर अपब्रिंगिंग दे ब्लेम देयर बैकग्राउंड्स के मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं दे आर True. स्टॉपिंग मी सो उसको देख के ना एट 18 हाँ एट 18 years of age True. he had this clarity कि Clarity. मुझे अगर ग्रो करना है Hmm. मेरे ये you know दायरे से निकल के ही मुझे आगे मुझे करना करना है। पड़ेगा Very good, very good. तो एक वो विलिंगनेस होनी चाहिए आई फील फॉर Correct, पीपल correct. टू जस्ट स्टार्ट ब्रिंगिंग दैट चेंज True, very true, very true. And I think lot of students are Hmm. definitely, like this. It's just that we have to give the push to the, हाँ others. Definitely, that is there. ओके सो आज जो बच्चे लेट्स से स्पेशली फाइनल लेवल पे या आईपीसीसी के मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे चुके हैं Mm-hmm. जहाँ पे यू नो जो मेंटल प्रेशर जो है जो थोड़ा बहुत और बिल्ड होने जाता है Mm-hmm. what do you recommend to them except the activity part how do they keep this balance because एक वो constant खुद का प्रेशर होता है Correct. there's a lot of expectation from yourself बराबर. there's a lot of एक level of frustration भी आ जाता है कि यार अब तो हो जाए so how do you help students deal with that No, so if I have to actually, so students, because वो क्या हो जाता है जब हम चीज़ें कर रहे हैं तो क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो जाती है तो आई थिंक फर्स्ट वन थिंग इज आई विल ऑलवेज टेल टू एनी स्टूडेंट इज स्टॉप कंपेयरिंग सो आई थिंक ये कंपेयरिंग वाला चीज़ जो बचपन से हमारे में फीडेड है ना हाँ। वो मतलब वो उस हिसाब से ना बाजू वाले के घर पे टीवी आया तो मेरे घर पे भी टीवी आना चाहिए correct बाजू वाले को इतना परसेंट आया तो मेरे को भी इतना आना चाहिए या तो मेरे बड़े भाई या बड़े बहन को इतना है तो मुझे भी आना चाहिए हाँ आई थिंक दैट कंपैरिजन इज बीन सो एनग्रेव्ड हमारे हाँ, इसमें वो वेरी बचपन से तो Yeah. हमारे उसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है कि फिर हम ऑटोमेटिकली खुद भी कंपैरिजन करने हाँ, शुरू कर हाँ। जाते हैं कंपैरिजन ज्यादा स्ट्रेस देता है हम्म, सो अगर मैं किसी और के साथ कंपैरिजन करने लग जाता हूँ तो मुझे बट नेचुरली स्ट्रेस दे ही देगा आई रिमेम्बर अ वेरी थिंग ड्यूरिंग माई CA फाइनल जर्नी बट नेचुरली मुझे 4 months की लीव मिलने वाली थी मेरा एक फ्रेंड था जो कंपैरेटिवली who's more scholar but naturally than me who could read and quickly grasp he got 6 months of leave okay अभी हमारे एग्जाम नवंबर में थे उसको 1 मई से छुट्टी मिल गई मैं तो हाँ। 1 मई को अभी भी ऑफिस जा रहा हूँ 10 घंटे के लिए एंड ट्रैवल भी कर रहा हूँ 2 घंटे तो 4 घंटे उसमें और जा रहे अब कहीं ना कहीं वो डे 1 1 मई को मेरे भी देंगे मैंने बोला ये तो कल जाके पढ़ाई करेगा फुल डे उसको छुट्टी है फुल डे और मेरे को भी तो सेम एग्जाम सेम टाइम पे फाइनल देना है उसको क्लियर करना है मुझे भी तो क्लियर ही करना है एग्जाम बट ऑन day 2 then I thought if I'm going to just sit and compare I am doing what? I'm doing nothing. correct So I'm like, You're no even problem. further limiting yourself Yes. Hmm. So I'm like, no problem. मेरे पास कितना समय है? Do I have time during my travel? Yes. Do I have time during my breaks? If I have lunch break of 1 hour, do I need 1 hour to take lunch? No. I will need 20 minutes to have my lunch, maybe 5 minutes to take rest. I will study for the remaining half an hour. correct Am I using still that time? So then on day 2, I'm like, I will use all my extra time that I have along with work. It's still, he also cleared, I also cleared. yeah So if I would have just sat and compared हाँ, every day, अरे यार वो तो पढ़ने लग गया और मैं नहीं पढ़ पा रहा वो पढ़ने लग गया मैं नहीं पढ़ पा रहा तो उन पर जो समय था ना मैं उसमें भी नहीं पढ़ पाता correct correct सो आई थिंक कंपैरिजन इज द क्या बोल सकते हैं विलन हाँ in this thing so I think to remove that stress and keep it sane stop comparing and then get into very dedicated disciplined routine schedule very essential very third thing which I would say find that 10 minutes 15 minutes half an hour to do something which you really enjoy
you know, जहाँ से इसे कट ऑफ कर सके. cut off. Absolutely, Correct, correct. absolutely. So I think these three things are is what I would advise, which will keep you sane always. Yeah. So you look so level-headed. कि हाँ जो भी है हो जाएगा. But I'm sure you also had your stressful moments during the Absolutely. preparation. What was the most stressful moment while you were preparing? A, two, how did you deal with it? स्ट्रेसफुल वाले मेरे सबसे को याद ज्यादा भी ऐसे याद है. लगा कि बस अभी तो नहीं, मुझे याद है खत्म ना, हो गया. इंटर एग्जाम्स में भी यू नो माय डे वन पेपर वाज डेफिनेटली नॉट एज पर एक्सपेक्टेशंस, एंड I यू guess नो majority वो पेपर population वन will फर्स्ट करेगा. पेपर विल ऑलवेज, और वो एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा ये था, एंड आई एम लाइक क्या हो गया जीवन में, यू नो, मतलब मैंने बोला पूरा सब खत्म हो गया, जिंदगी खत्म हो गया. बट देन वंस अगेन यू नो वो पेरेंट्स ने वगैरह सब थोड़ा सा बोला नो प्रॉब्लम, लाइक ओके चलो लेट्स गेट बैक, कल दूसरा पेपर देने का है. सो आई थिंक यू गेट बैक टू दैट. सो ड्यूरिंग अगेन ऑफ कोर्स सीए फाइनल के टाइम पे भी, बिकॉज आपके पास इतना सारा पोर्शन है Yeah. पढ़ने के लिए, यू नो बैक इन यू हैव टू फिनिश, तो काफी बार यू नो वैसे टाइम हो जाता है कि भाई यू लाइक मुझे याद रह रहा है कि नहीं, हाँ. यू आर यू नो हाउ डू यू Every फिनिश. revision के round पे it's like ये तो पहली बार पढ़ रहा है. But what keeps you sane at that point in time is always the self belief that you know have. And I have always believed कि भाई मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मुझे याद रह रहा है ना, इसलिए तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, राइट. कोई भी जर्नी में मैं इंटर तक पहुँचा हूँ, फाइनल तक पहुँचा हूँ, अरे बचपन से हम पढ़ रहे हैं, बिना याद करे थोड़ी हम आ रहे हैं, राइट. मीनिंग आवर माइंड इज केपेबल Yes. of understanding things, remembering things, remembered वही things back to paper. Our हाँ. mind is so used to it's a process for हमारे लिए कुछ ये ऐसा लगता है अरे यार हम क्या कर रहे हैं, हाँ. बट माइंड के लिए तो वो नॉर्मल है ना. Correct. वो बोलता है तू हर 6 महीने में यही करता है, पढ़ता हाँ. है, एग्जाम देता है, लिख के आता है. हाँ. माइंड के लिए तो मैकेनिकल प्रोसेस है ना. तो आई थिंक दैट सेल्फ बिलीफ के भाई ठीक है अभी ये है, and then to study that, I think that has always been there. So I have kept my self belief strong. Wow. So I guess with this, I come to the very last question that I have for you. What are the top 3 lessons that the journey of CA has taught you? Top 3 lessons, I would say one is always multitasking. So you know I think, and a lot of people take multitasking as negative word, but Yeah. I think it's always positive because हाँ. you study 8 subjects at a time, 8 different subjects which have no correlation amongst them, Huh. right? So that's multitasking. You're trying to put in 8 different things. हाँ. You're trying to do college, articleship, your co-curricular activities, your passion, studies, everything together. You're trying to juggle. So I think it teaches you. So I think my journey has taught me that. Number one. Number two, what my journey has taught me is if you're disciplined, it will always pave the way. Matlab, being disciplined is very important. I think that is there. Number three, I'll have to think. let me think the third one. But I think I'll still give a higher ranking to the ecosystem of maybe friends that you know have. Becomes very essential. काफी लोग ना एकदम अलूफ होके Yeah. चीजें करने लग जाते हैं पढ़ने, बट दैट आई थिंक दैट सेट ऑफ फ्रेंड्स वी ऑलवेज से ना कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people that you are Correct. surrounded with plays very important role. True. I think, and वो वैसे हो जाता है ना, हम जब सब साथ में पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ाई ऑटोमेटिकली हो जाती है, राइट. सो वो वैसे ही है, अगर हम कर रहे बट सब साथ में कर रहे और पढ़ नहीं रहे और टाइम पास कर रहे तो नहीं होगा ना. Correct. बट नेचुरली, बट इट हैज टू बी वेरी टुगेदर. सो आई Yeah, थिंक so थर्ड, the group should be pushing each Yes. other and not pulling each other yes, to influence very you and essential. So everything. I think third, I will always say that Wow. ecosystem friends that are I'm surrounded with will always pave the way. Fantastic, fantastic. It was a lovely conversation with you, Rudesh. My And I pleasure. wish you all the best, and to the students who are watching this. CA इतना बुरा भी नहीं है. I mean, and I'm saying that this despite having quit it, it all boils down to one, your choice, दूसरा, your acceptance from True. what we've heard here. Thank you Absolutely. Thank you so much. Thank you very much.